Good morning, class 12. This is your subject business studies, chapter number 9, financial management, lecture number 3. See, dividend decision is equal to whether to distribute earning to shareholders as dividend or retain earnings to finance long-term profit of the firm. Fine, beta. डिविडेंड डिसीजन रिलेटेड होता है कि या तो हमें अर्निंग जो है वो शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करनी है या फिर हमें रिटेन करनी है उस अर्निंग को बिजनेस में किसके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए किसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए बेटा फर्म के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए फाइन so must be done keeping in mind the firm overall objective of maximizing the shareholders wealth. This word is very important. Maximizing the shareholders' wealth. So, beta, while the dividend constitute the current income, the reinvestment as retained earning increases the firm's future earning capacity. Definitely, if we have sufficient money in our business, fine. If we have retained sufficient earning in our business, we can earn long-term profit for the firm. Isn't it so? So the extent of retained earning also influence. What does it influence? The financing decision of the firm. Fine? Understood? And what is the overall objective of retained earning? The overall objective of retained earning is to maximize the shareholders' wealth. Fine? Now see factors affecting dividend decisions. Number one, earnings. Companies having high and stable earning could declare high rate of dividend, and companies dividend are paid out of current and past earning. दे आर सेइंग वो कंपनी जिनकी हाई अर्निंग होती है वो डिविडेंड का रेट भी हाई कर सकते हैं, वो हाई डिविडेंड दे सकते हैं क्योंकि कंपनी को डिविडेंड देना होता है वो करंट अर्निंग में से देना होता है या फिर पास्ट अर्निंग में से देना होता है. फाइन. सेकेंड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड.
दे आर सेइंग डिविडेंड में स्टेबिलिटी कितनी है, क्या हम हर महीने हर एवरी मंथ वी आर गिविंग सेम टाइप ऑफ डिविडेंड, सेम amount of dividend, or we are changing. So let's see. Companies generally follow the policy of stable dividend. मोस्टली कंपनीज जो है वो पॉलिसी फॉलो करती हैं कि उनका डिविडेंड जो है वो क्या हो, स्टेबल हो. फाइन बेटा. The dividend per share is not altered and changed in case earning change by small portion or increase in earning is temporary in nature. Fine. Understood beta? Third one is growth prospectus. They are saying in case there are growth prospectus for the company in the near future, then it will retain its earning or no or less dividend will be declared. They are saying अगर कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, ग्रो करने वाली है नियर फ्यूचर में, तो ये क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, अपने पास अर्निंग रिटेन करेगी. फाइन बेटा. ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कहता है कि जनरली द कंपनीज पे लेस डिविडेंड and retain more money out of their earning to finance the required investment. So the retained earning are cheaper source of finance as compared to other sources. Fine. So company which do not have any growth plans can pay higher dividend. फाइन. अगर कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ग्रोथ प्लान है तो वो डिविडेंड लेस देगी, और अगर ग्रोथ प्लान नहीं है तो डिविडेंड हाई देगी. फाइन बेटा. नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन. दे आर सेइंग डिविडेंड इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश and availability of adequate cash is most requirement of declaration of dividend. They are saying in simple word we can say the payment of dividend involves outflow of cash ना, कि कैश जा रहा है तो हम डिविडेंड दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है ना बेटा. So availability of enough cash in the company is necessary for the distribution of dividend. अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारे पास कंपनी में इनफ कैश होना जरूरी है. इन सिचुएशन ऑफ सरप्लस कैश कंपनी कैन डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड. अगर सरप्लस कैश होता है तो डिविडेंड हाई होता है, और अगर कैश की शॉर्टेज हो तो डिविडेंड लो होता है या फिर डिविडेंड नहीं होता है, नहीं देते. फाइन बेटा. सो दिस इज अबाउट कैश फ्लो पोजीशंस. Next one is preference of shareholders. They are saying while deciding about dividend, the preference of shareholders is also taken into account. So in case shareholders desire for dividend, then company may go for declaring the same. In simple word we can say beta, if the shareholder in general desire that at least a certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same. So there are always some shareholder who depend upon a regular income from their investment. Fine beta. Sixth one is taxation policy. A company is required to pay tax on dividend declared by it. If tax on dividend is higher, company will prefer to pay less by way of dividend. Whereas if tax rate are lower, then dividend can be declared, more dividend can be declared by the money. Fine. So they are saying a company is required to pay dividend depends upon taxation policy as well. बेटा अगर हमें टैक्स ऑन डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा तो वी हैव टू पे, द कंपनी विल प्रेफर टू पे लेस डिविडेंड. और टैक्स रेट अगर हमारा कम होगा, ठीक है, कम देना होगा, तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर मोर बाय द कंपनी. फाइन. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस मच एज वेल.
Next one, see issue of bonus shares. They are saying company with large reserve may also distribute bonus shares to increase their capital base, as it signifies growth of the company and enhances its reputation also. ऐसी कंपनीज जिनके पास लार्ज रिजर्व होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बोनस शेयर्स टू इंक्रीज देयर कैपिटल बेस, एज इट सिग्निफाइज ग्रोथ ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, एंड इनहेंसेस इट्स रेपुटेशन ऑल्सो, और रेपुटेशन भी बढ़ाती है. फाइन. नेक्स्ट वन इज लीगल कंस्ट्रेंट्स. Under provision of Companies Act, all the earning can't be distributed, and the company has to provide for various reserves. This limits the capacity of the company to declare dividend. They are saying there are so many legal factors. Certain provision of Indian Companies Act 2013 place restrictions on payout as dividend. For example, the rate of dividend declared cannot exceed the average rate declared by the company in the last 3 years. So after dividend, reserve should not be less than 15% of its paid up share capital. So such provision must be applied to while declaring the dividend. Fine, beta. Understood? Next one, financial planning. Financial planning. What do you mean by financial planning? They are saying it involves preparation of a financial blueprint of an organization. So it is the process of estimating the fund requirement of a business and determining the possible sources from which it can be raised. Beta, they are saying financial planning is essentially the preparation of financial blueprint of organizational फ्यूचर ऑपरेशंस. फाइनेंशियल प्लानिंग बताती है कि ग्रोथ कितनी है, परफॉर्मेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है और रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कितने हैं हर एक प्रोजेक्ट में. फाइन. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स. फाइन. See beta, objectives of financial planning. First of all, to ensure the availability of funds whenever they are required, to include estimation of funds required for different purposes like long-term assets or working capital requirement. They are saying estimation of funds required for different purposes like long-term assets or meet day-to-day expenses of the business. Estimation of time at which these funds are to be made available, and specifying the sources of these funds. Fine. See, specifies the sources of these funds to see that the firm does not raise resources unnecessarily. What does it mean? To see that the firm does not raise resources unnecessarily. It means if excess funds are available, it will unnecessarily increase the cost and the resources will remain idle and it may encourage wasteful expenditure. अगर हमारे पास excess funds होंगे तो भी हम उसे cost को increase करने में unnecessarily increase हो जाएगी और हमारे resources जो हैं वो idle खराब बेकार होंगे. तो it may encourage wasteful expenditure. Fine.
So a proper matching of funds requirement and availability is required by financial planning. देखिए बेटा, shortage of funds is equal to or greater than firm cannot meet its expense payment obligations. अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगी तो फर्म अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस जो भी फर्म को पेमेंट करनी होगी किसी भी पार्टी को वो नहीं मीट कर पाएगी. और अगर सरप्लस फंड होगा तो डू नॉट अर्न रिटर्न बट एड टू कोस्ट. रिटर्न तो अर्न नहीं कर पाएगी लेकिन वो कॉस्ट में ऐड होता जाएगा. रिसोर्सेज बेटा आइडल होंगे तो कॉस्ट में ऐड होगा. कैसे ऐड होगा? बिकॉज वी आर पेइंग टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज टू डू दिस वर्क, but so many employees are idle because we have extra surplus funds, we have surplus funds, we have surplus resources, so it will definitely add to cost because we will have to extract cost from the customer now, isn't it so? So surplus funds do not earn return but add to cost. Fine.